Hello respected teachers and my dear friends. I am Diyan Doshi. Today we are here to celebrate the auspicious festival of Guru Purnima by paying deep gratitude and devotion towards all our Gurus for their guidance. Guru is a Sanskrit word made up of two roots, Gu and Ru. Gu means darkness and Ru means remover. Thus, Guru stands for teacher, who is the remover of darkness. Guru Purnima is celebrated on the full moon day in the month of Ashad, as per the Hindu calendar. Guru Purnima is also celebrated to mark the birthday of Maharishi Vedvyas, also the writer of Mahabharata. Hence, it is also called Vyas Purnima. People visit temples, observe fast, perform puja at their home to seek blessings. On this day of Guru Purnima, we pay our heartily gratitude to teachers, school staff and management for making it possible to continue our learning even in this difficult time of pandemic. जो बनाए हमें इंसान, दे सही और गलत की पहचान, उन देश के निर्माताओं को हम करते हैं शत प्रणाम. We wish you all a very happy Guru Purnima. नमस्ते, मेरा नाम आरुष मिलिंद काटे है। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सही गुरु दक्षिणा क्या होती है इसके ऊपर एक कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत पहले की बात है, वर्षों से एक गुरु अपने आश्रम का संचालन कर रहे थे, किंतु वो कुछ दिनों से बहुत चिंतित थे। उस आश्रम के गुरु बूढ़े हो गए थे और वे अपना शेष जीवन हिमालय में बिताना चाहते थे। लेकिन गुरुजी को सिर्फ यही चिंता थी कि उनके बाद इस आश्रम की कौन जगह लेगा। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा शिष्य ऐसा है जो आश्रम को ठीक से संचालन करेगा। आश्रम में दो योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को प्रिय थे। आखिर उनका एक युक्ति सूझी। उन्होंने उनको पास बुलाया और कहा, शिष्य जी, गुरुजी, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक गेहूं की मुट्ठी दे रहा हूँ। तुम्हें इसको सुरक्षित रखने हैं और जब मैं आऊँ मुझे सुरक्षित लौटा देना। जी गुरुजी, हम इस गेहूं को सुरक्षित रखेंगे। ऐसा बोलकर गुरुजी तीर्थ यात्रा पे चले गए। पहला शिष्य गुरु को भगवान मानता था। गुरुजी ने जो गेहूं देते उसने वो एक सुरक्षित पोटली में रखे और उसकी रोज पूजा की। दूसरा शिष्य गुरु को ज्ञान का देवता मानता था। गुरुजी ने जो गेहूं देते उसने वो आश्रम के पीछे खेतों में बो दिए।
कुछ महीनों के बाद गुरुजी आश्रम में लौट आए। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ने पूछा, शिष्य। जी गुरुजी। मैंने जो तुम्हें गेहूं देते उसका तुमने क्या किया? पहला शिष्य गुरु को गेहूं की पोटली देके बोला, गुरुजी मैंने इस गेहूं को एक सुरक्षित पोटली में रखा और उसकी रोज पूजा की। गुरुजी ने देखा ये गेहूं सड़ चुके थे और वे किसी काम के नहीं थे। दूसरा शिष्य गुरु को आश्रम के पीछे खेतों में ले आया और खेत दिखा के बोला, मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, जो आपने मुझे खेत गेहूं दिए थे वो अभी मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उनको खेतों में बो दिए। शाबाश। लहराती फसल देखकर गुरुजी का चित्त प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु का ज्ञान फैलाता है, बांटता है, वही एक श्रेष्ठ शिष्य है। मुझे इससे अच्छी गुरु दक्षिणा कोई नहीं दे सकता था। गुरु दक्षिणा का अर्थ गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा का एवं ज्ञान का प्रचार व प्रसार करे, उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाए। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में भी लिया जाता है। गुरु दक्षिणा गुरु से प्रति सम्मान व समर्पण की भी भाव है। गुरु से प्रति सही दक्षिणा ये है कि गुरु अब चाहता है कि अब तुम खुद गुरु बनो। धन्यवाद। Dear teachers, what an interesting year it has been. I know that you would rather be in your classroom right now, teaching your students and watching them grow day by day. But teaching looks a lot different these days, all thanks to the digital teaching world. If you haven't heard it today, you are doing an incredible job keeping the love of learning ignited. Thank you for your patience with technology and your ability to teach students even from a distance. Please know that we see you, we appreciate you, and we all applaud you. There are so many heroes in our world right now, and you are one of them. On this auspicious occasion of Guru Purnima, I hope and pray that I always get guided by you, and may you always shower me with your... To all my teachers and my friends, I am Dhanishta Nilesh Ugalmukle from class 4th B. Guru Purnima is the day to celebrate and pay our gratitude to our gurus. I would like to thank all the teachers for inspiring me to be my best and for being there to guide me when I needed help. Having you all in my life opened my eyes to my own inner strength and has motivated me to become and do more. You all inspired in me a love for learning and made me feel like I could ask you anything. You always had the patience for my questions and knew just how to explain the answers. Thank you for being truly outstanding teachers. Best wishes to all on this auspicious occasion. Hi everyone. I am Doug Jain. On this occasion of Guru Purnima, I would like to express my gratitude to all teachers in a form of a short poem. Teachers are the pillars of modern civilization. They sow the seeds for our future generation. They shape our character and give us education. They inspire us to use our imagination. They cannot be replaced by any technology. They can make any subject interesting, even microbiology. Teachers had to create every other profession, engineering or accounting. This shows the direction. School is our second home, that's what people say. And changing us caterpillars into butterfly is in teacher's DNA. Thank all. The beacon in the dark and the hope that gives us strength to survive is a teacher. I take an immense pleasure to honor and convey my
my wishes to the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. The teacher are the person who have given us impeccable contribution in shaping us. Teaching is a noble profession. There is a saying that the teachers are greater than the parents. Parents give a birth to a child, whereas teachers mold that child's personality and provide bright future. Apart from academics, teachers guide, motivate, and inspire to become better people. They are source of knowledge and wisdom. I would like to extend my gratitude to every teacher for selfless service and dynamic support. We are always grateful to you. Good morning, teachers and my friends. My name is Arjun Neha Ranjit Kanere. I will talk about importance of Guru Purnima. Guru Purnima is celebrated on full moon day in the Hindu month of Ashad, June, July. It is known as Vyasa Purnima because it is birthday of Veda Vyasji. It is celebrated to express gratitude to our gurus or teachers. They help us to be good human being and a good citizen of India. They convert the rough stone into the diamond. We are also very thankful to our parents and teachers who teach us with so much pain and efforts during our online classes. Thank you.